Wait. Hello, Let me. Jen. I just. I'm Major Mohammed Ali Shah. There, Dolly got a call. One of your fans has called up Dolly. He has a huge fan following, anyhow. So, Yeah. I'm Major Mohammed Ali Shah, and I have the honor and pleasure of being in conversation with one of the most enterprising, dynamic, talented, and a go-getter lady who believes in making things happen. She's the founder of the Delhi Poetry Festival, who needs no introduction at all. In fact, people who follow the Delhi Poetry Festival, they definitely would be knowing the founder, who is a voracious reader, a writer, a poet, whatnot. I mean, you just name it. So, but right now, Delhi Poetry Festival is coming up, and there's a lot of buzz building up. We can see the testimony to that is the call which Dolly received just now, and you can smile, Dolly. It's okay. Don't look so serious because फिर आप सीखोगे तो मैं भी बहुत serious look दूंगा मेरे में. All right. So let's go straight further on in a conversation with Dolly. Dolly, hello and Jai Hind. Thank you very much for spending time. Hi, Ali. Jai Hind. Dolly, And tell very us. happy to be here. Thank you for having me over and to share my thoughts with your Thank you. audience. Thank you. Very, very sweet of you. Dolly, the Delhi Poetry Festival. I tell you, it is. I had the honor of participating in it last year, and of course, Dolly called me this year as well for some workshop. And I say a name to reckon with. And tell us about how the inception of the Delhi Poetry Festival came about, Dolly. Okay. So, Ali, you'll be very happy to know that we have completed 10 glorious years of Delhi Poetry Festival this year. We started in 2013, and it's 10 years since Delhi Poetry Festival came into existence. And we have given the city some very uh, substantive content around poetry and literature. And we started Delhi Poetry Festival, a standalone multilingual platform, because all the lit fairs that existed around that time in 2013 did not have much space for poetry. And I think there is a poet in every person, there are more poets than writers, I would like to believe. So I wanted to give them a dedicated platform. So this is how DPF, Delhi Poetry Festival, came into existence. And Right. we have So, given about six successful editions. And because of COVID, we could not have a offline on ground DPF for 3 years. So here we are. We resumed in 2022, and seventh season we are going to celebrate this December 16th and 17th. wow, that's brilliant. So, Dolly, I would like to know the kind of support that you receive for this. I mean, कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से और पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपके साथ मिलाने में लग जाती है. As Paulo Coelho has put in The Alchemist as well, if you truly desire something from the bottom of your Yeah. heart, the whole universe Yes. conspires to get it together for you. So you Yeah. I obviously also got believe this in very good. manifesting. Sorry. So Yeah. what Yeah. is the support you received? We received fair support, but we would have liked some more support from people, because to have any festival of this size, one needs funds to have a successful uh, festival of. We started with having a 3 day, 2.5 days festival. We've come down to two, because it does involve a cost. But we've had, along the way, we found some supporters, patrons, well wishers, mentors, and we are eternally grateful to them for, making this uh, festival a success, a brand. So it is not my success or my team's success. It is, and the poets who have participated. People have graced our stage, all of them. So, but we Wow, would that's like more people to acknowledge poetry, more literature, arts, and come and support. Because I would like to say, poetry is a vehicle of change. We're trying to bring a change, a social consciousness, social responsibility. So I think more and more people should come forward to support us. एब्सोल्युटली यार. एक शेर अर्ज करता हूँ मैं आपके लिए. वो मजरू सुल्तानपुरी ने भी खूब कहा था. मैं तो Ji. अकेले ही चला था जानिबे मंजिल. मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल. मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. Banta gaya. That's for you, Absolutely. and that's for Delhi Poetry Festival as well.
So karma So बढ़ रहा है और बढ़ भी रहा है. The tribe is increasing, and we're very happy to know that more and more people are wanting to collaborate. They want to be a part of the festival. What more can a festival founder or organizer want? So absolutely, absolutely, exactly. I saw the kind of craze and the kind of people who are storming into India Habitat Center. I mean, जब ये हुआ था, and they जी, were like, and जिस तरीके से reviews and the appreciation that you and your team work. How important to you is a team? Because as we all know, a boss says I, a leader says we. A boss says get there on time, a leader says get there ahead of time. Let's together. A boss knows how it's done, a leader shows how it's to be done. So you yeah. have actually shown your team कैसे इसको करना है. Tell me about how You easy have or to. difficult it is. Yeah. Ali, you have to lead from front. You have to, if there's something to be done, you have to volunteer first, then the team follows. You can't just sit back and say कि ये कर दो, वो कर दो. And if I say कि पहली मशाल मैंने उठाई है और आप मेरे साथ चलो, तभी चलेगा कारवां. Otherwise, so nobody does anything when the person who is leading will not take the first step. तो ऐसा ही किया है अगर आपने हमें फेस्टिवल में देखा है हम भी we also keep running and we are extremely busy. Oh yeah, Sometimes I yeah, feel yeah. कि sit down and enjoy the content what's happening. Well, it doesn't happen because Yeah, you all on the your time toes. we Yeah. You on your are toes throughout. I wonder if you got to enjoy it at all. I mean, काम यहाँ से वहां भागना, ये coordinate, वो coordinate, ये वो. It was yes, crazy. yeah, Really, really you crazy. have seen it yourself. Yeah. Yeah. But- So, जी. so Dolly, Indian poets पे नहीं आएंगे because then you might be say somebody might feel bad who would be knowing you. अच्छा, मैं जो poetry festival में आता है मेरा नाम क्यों नहीं लिया इसमें और whatever. आपके हिंदुस्तान के अलावा बाहर कौन हाँ. फेवरेट आपका ऑथर है पहली बात तो, और कौन फेवरेट पोएट है? मैंने सच्ची बताऊं कि मैंने अभी ज्यादा इंडियन पोइट्स और राइटर्स को ही फॉलो ज्यादा किया है. आर कल्चर आर लिटरेचर इज वेरी रिच, बहुत रिच है. बट अगर हम क्लासिकल पोएट्स व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल पोएट्स जो हमने स्कूल में पढ़े हैं, ऑफ कोर्स पोएट्री हैज इवॉल्व्ड. समटाइम्स जो हमारे आर्केक हमारे पुराने क्लासिक चीजें इतनी रेलिवेंट नहीं रहती. But learn, I mean, I'll tell all the youngsters, don't emulate them, write your own poetry, but आप उनको पढ़ो जरूर. चाहे आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ रहे हो या सिल्विया प्लाथ को पढ़ रहे हो या फिर आप अरे वाह. नेरूरा को पढ़ रहे हो, आप The उनको road, पढ़ो the जरूर. road less traveled. Two Yeah, roads diverged in a yellow boat, and I'm sorry I couldn't travel both, but being a traveler along, I stood and looked down at one as जी far as I जी. could, and then took the Yeah. other. I mean, amazing poet. And of course, and whose woods these are? I mean, the woods are I have promises to Lovely, keep dark and alive cheap. हाँ. before I dwell. Yeah, yeah. Right, go on, जी please, जी. please. These things, these are very legendary lines. ये हमारे they're etched on our heart and all, but वो सब पर मैं अभी सबको like when people say कि what is good poetry, what is there is no good poetry. Every poetry is your, I mean, a poet's experience, observation and expression. ये दिल की बात होती है. I will never say कि इसकी poetry अच्छी है, उसकी नहीं अच्छी है. And for that matter, I will not even say कि अब हम गुलजार साहब को फॉलो करते हैं, जावेद अख्तर को करते हैं, उनका पढ़ते हैं. हम इफ वी टॉक अबाउट हिंदी पोएट्स तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हैं. मतलब जो आई एम श्योर चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज टॉट इन द स्कूल्स. और पोइट्री इज लाइक टेकन एज अ लेटर कि ओके ये टिक हो गया, आगे बढ़ो. बट आई थिंक पोइट्री शुड बी टॉट. ऑल ऑफ दीज क्लासिक पोएट्स, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो हमारे नॉन इंडियन पोएट्स हो, they all have something to teach you. They all have some lines that you will always remember. तो मैं बोलती हूँ कि आज आप अपने ही लिखो, किसी को एम्यूलेट मत करो, किसी को कॉपी डोंट कॉपी एनीबॉडी स्टाइल. समटाइम्स आई एम ऑल्सो टेम्पटेड, अरे दिस इज वेरी नाइस, आई विश आई कुड राइट लाइक दैट. बट एट द एंड ऑफ द डे आप वैसा ही लिखोगे जैसा आपका दिल, आपका अपने आप से नेचुरली ऑर्गेनिकली लिखा जा रहा है. यू नो But Right. yes, you recite a lot of poetry. I want to ask you, do you also write, Ali? I write as well, yes. बल्कि मैं ना डिफेंस एनालिस्ट कोई था नहीं, मैं बेसिकली था एक्टर और मैं पोएट ही था बेसिकली. हाँ. तो जी. मैंने एक ओपन लेटर लिखा था टू जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट व्हेन द पुलवामा अटैक्स टुक प्लेस, एंड आई Okay. बैश्ड देम रॉयली इन दैट लेटर. वो लेटर पढ़ के ही मैंने जो फौज में गोली चला के वो गोली चला ली मैं लेटर के थ्रू.
And the letter went Oh, viral. okay. The letter went so viral कि भाई all the अच्छा. TV channels are interviewing me on that कि of the content of the letter it had and international बाहर के देशों ने भी कॉल आने लगे मेरे को and So उसके that is बाद the से power of pen, ना? Power of yeah words. हाँ. absolutely तलवार से absolutely ज्यादा तीखी होती है. Words like the pen is sharper than a sword, you know. absolutely 100%. So it was my pen, that article that I wrote which became so viral, and then of Yeah. course I have a decent power of expression actually while writing or speaking both, and so that उसके बाद मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सो टू से जो टीवी चैनल Yeah. बनाते हैं जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ मेरे को डिफेंस एनालिसिस का ए नहीं आता मैं जिंदगी में Okay. कभी कोई एनालिसिस किया ही नहीं था एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड यू नो बिकॉज आई कुड राइट it happened for that reason. Okay. Okay. Yeah. So that's That's, how. you see, if you, अगर आप पढ़ सकते, आप लिख सकते हो, एंड मोर इम्पोर्टेंट, अगर आप पढ़ सकते हो, people actually underestimate the power of readers. आप लिखते जा रहे हो और कोई पढ़ने वाला नहीं है और कोई इसको तो फिर कोई फायदा नहीं ना आपका. अगर आप Correct. पढ़ सकते हो और आप उसको, इफ यू कैन काइंड ऑफ लर्न और गेट मोटिवेटेड, तो आप अगर उससे कुछ सीख रहे हो तो वो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है. आई थिंक दैट इज द पावर Correct. ऑफ a written word, whether it's poetry or it's just non-poetry literature. पोइट्री की बात मैं करूंगी अली, बिकॉज दिस ईयर हम लोग एक बहुत 10 years के बाद हम एक लीप ले रहे हैं. वी वॉन्ट टू मेक आवर प्लेटफॉर्म वेरी वेरी सोशली कॉन्शियस एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल. हम चाहते हैं कि जो आवाज़ उठे, कलेक्टिव वॉइस इंडिया हैबिटेट सेंटर में, वो कहीं इम्पैक्ट करे हमारी सोसाइटी को. सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख रहे हो क्या हो रही है, डिटीरियोरेट हो रही है, हाउ इट इज़, जो हमारा पूरा मॉरल फाइबर डैमेज हो रहा है. इफ राइटर्स, पोएट्स, ऑथर्स, आई मीन आर्टिस्ट, और anybody who's remotely connected with arts and creative arts or performing arts, अगर वो लोग नहीं कुछ करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उनके आर्ट का, उनके हुनर का, उनके टैलेंट का. आई थिंक वी शुड ऑल बी मोर कॉन्शियस, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो. I sometimes wonder why Bollywood actors who who are actually influencers, जिनको so many people look up to them, why don't they ever raise a voice? They do sometimes. काफी होता है, निर्भया के टाइम बहुत हुआ था, लोग आए थे, पर fearlessly हमारी डेमोक्रेसी में थोड़ी आवाज उठाने वाले लोग होने चाहिए ना. सो पोइट्री लाइक वी से, हमारा जो एक आने वाला है, अभी हमने अनाउंस नहीं किया, जो थीम है आपके प्लेटफॉर्म पे, आई एम अनाउंसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पोएट्स विद पर्पस. सो दैट्स अ थीम. पोएट्स, पोइट्री इज अ व्हीकल ऑफ चेंज, वी ऑल नो दैट. एंड अगर पोइट्री नहीं बदल सकती कुछ, तो खाक है ऐसी पोइट्री, आई शुड से दैट. अगर पोइट्री इफ कैनॉट इम्पैक्ट इन अ गुड वे, देन आप चांद के ऊपर लिखो, सितारों के ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. We must write sometimes. I don't say कि तुम only write on this, but at least इसके बारे में भी लिखो. अगर आप देख रहे हो injustice होते हुए और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप उतना ही injustice कर रहे हो. This is what we at Delhi Poetry Festival would like to uh, convey to our followers. Yeah. Absolutely, I totally agree with you. Yeah. आप ये बताइए आपकी फेवरेट पोएम निजी तौर से कौन सी है फेवरेट पोएम मुझे फैज साहब की, यू नो दैट अली, फैज साहब बहुत अच्छे लगते हैं. आई रियली लाइक हिज पोएट्री. इट्स वेरी रेवोल्यूशनरी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं बोलूँगी, वो थोड़ी-सी क्योंकि डार्क टाइम्स में लिखी थी, डार्क हो गई थी. कुछ हैं जो ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, जो बहुत पॉज़िटिविटी से भी भरी हुई हैं. अ, अब जब आप पूछो तो मुझे ऐसे ध्यान नहीं आता है, बट या आई लाइक सो मेनी पोएट्स एंड सो मेनी पोएम्स दैट इफ यू स्टार्ट आस्किंग मी तो मुझे ध्यान में नहीं आएगा. आई लाइक साहिर आल्सो. अरे अमन. साहिर लुधियानवी अमिताभ प्रीतम एंड एम्ब्रोज यस, आई राइट इन इंग्लिश, बट जो खून की ज़बान है ना, वो तो हिंदुस्तानी है. वो वाओ दिल उसी पे धड़कता है. बट लिखते समय वो एक्सप्रेशन, थॉट इंग्लिश में आता है, सो आई राइट इन इंग्लिश. बट सुनती और पढ़ती मैं बहुत पोइट्स को हूँ. दुष्यंत कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, पाश, सुरजीत पात्र, पंजाबी poet, all of these legendary poets, I like to listen to them. And I've had the honor of inviting Surjit Patar. You were there, na, last time he was. So, yes. And
And then what we do, we get our poets, people like you having a good booming voice, recite some of classical poets like Faiz ko padho, अरे ab Saiz शुक्रिया, ko padho. आपने आपने यू मेड माय डे बाय सेइंग आई हैव अ गुड वॉइस, बिकॉज जब मैं बच्चा था आई वुड स्टैमर, स्टटर, लिस्प, गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग, आई कुडंट रिमेंबर लाइंस. तो अब Yeah. भाई, इफ द फाउंडर ऑफ द दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल इज सेइंग आई हैव अ गुड वॉइस, so my day is made. No, no, no. But so many people listen to you and they log into your programs means that you have, and the way you recite poetry in a very theatrical way. अब मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ कि हाँ हाँ, आप एक बिल्कुल जरूर. साहब की आप फैज साहब की एक नज्म पढ़ें. अरे एक जरूर, हम या वो एक नहीं दो पढ़ेंगे आपके लिए. वो ठीक पढ़िए. है, All जरूर. आई right. एम ऑलवेज हैप्पी टू परफॉर्म, ऑलवेज Yes, हैप्पी, ऑलवेज yes. रेडी. एक तो मैं Yeah. करूंगा बोल. बोल के लब Okay. आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है. तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है. देख के अंगार की दुकान में टुंड है शोले, सुर्ख है आन. खुलने लगे कुफरों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन. बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जां. बोल जो कुछ कहना है कह दे. एंड आई वुड डू द सेकंड वन ऑफ फैज साहब. आई कैन डू. हम देखेंगे या आज बाजार में, और लेट मी डू. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. आई नो यू Yes, लाइक दैट, yes. दिस वन, है ना. Please read that. मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है. तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था. मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए. मैंने फकत चाहा था यूं यूं हो जाए. और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वफी की राहत के सिवा. अनगिनत सदियों की तारीख, बहिमाना तिलिस्म रेशमो अतलसों काम ख्वाब में बुनाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में, जिस खाक में लिथड़े हुए, खून में निलाए हुए, जिस निकलते हुए अमराज की तरुणों से, पीप बहती हुई गलते हुए नसूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए. अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए. और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वासी की राहत के सिवा. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. आपसे अब ये पूछना था, बिकॉज बीच में आई थॉट ऑफ द, ओके, आपसे अगला क्वेश्चन मैं क्या पूछूंगा, तो उस पे आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड देयर. तो अब मेरे को ये आपसे पूछना है, आपके हिसाब से तर्जुमा, ट्रांसलेशन कितना जरूरी है, होना चाहिए कि नहीं होना. बिकॉज सम पीपल से इफ यू डू, इफ यू होना ट्रांसलेट चाहिए. पोएम, होना चाहिए. ओके. Yes. होना एंड चाहिए पर राइट. सॉरी, सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए. क्योंकि ये जवाब मैं खुद एक तलाश रहा हूँ, जी. एंड आई हैव हर्ड माय अंकल मिस्टर नसीरुद्दीन शाह सेइंग दैट नहीं नहीं नहीं, तर्जुमा करके यू स्पॉइल द एसेंस ऑफ द पोएम. आई हैव हर्ड माय आंट रत्ना पाठक शाह सेइंग विदाउट ट्रांसलेशन अगर समझ में नहीं आए पोएम तो क्या मतलब उसका. सो आई हैव हर्ड जी. बोथ दिस. सो ये जवाब एक ऐसा है जिसको मैं खुद तलाश रहा हूँ, और मुझे अगर पोएम का मतलब समझ में नहीं आता है, आई डोंट एंजॉय इट माई सेल्फ. दैट्स समथिंग आई वांट टू आस्क यू, डॉली. या तो होना चाहिए. सो या अली, मैंने भी खुद ट्रांसलेशन किया हुआ है. मैंने और मुझे लगता है ट्रांसलेशन गेट्स यू अ बेटर रीच. आपको नहीं, आपके classical poets को. There are people who have language issue, who don't understand the language originally written by the poet. तो वो क्यों deprive हो? They should also understand. They should also enjoy कि what the poet has written. Like I told you about Sujit Patar, वो पंजाबी के poet है. And I remember one of our poets saying, काश कि मुझे पंजाबी आती. So this is how important, because this, आप एक पोएट जब आर्टिकुलेट कर रहा होता है, जो पोएट उस पर स्टेज पर होता है, जब एंड एक्सप्रेस कर रहा होता है, पीपल आर अपलॉडिंग. दोज हू डोंट अंडरस्टैंड दिस रियली विश कि अरे मुझे आता होता, ये समझ आता. मैंने इरशाद कामिल की पोइट्री को मैं बुक करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ बुक, काफ़ी प्रोजेक्ट देर से चल रहा है पर बीच में रुक गया था. मैंने वो सारा ट्रांसलेट नहीं किया है, ट्रांसक्रिएट भी नहीं किया है. आई हैव जस्ट टेकन हिज पोइट्री, पिक्ड अप द नुआंसेस, ट्रांसलेटेड इट, एंड उसके अराउंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से वो किया है. तो अगर ऐसी कुछ स्टडी होती है तो आई वुड से कि इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन. पर येस, यू राइट, एसेंस नहीं जाना चाहिए. essence should the translator should really take care कि जो पोइट्री का एसेंस है, जो ओरिजिनल वर्क है, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. अगर आप कर सकते हो अच्छी ट्रांसलेशन तो अटेम्प्ट करो, इफ यू कांट देन डोंट.
और let the guy who knows his job do it. तो बहुत लोग करते हैं ट्रांसलेट, बहुत चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं। तो आप एक बात और, ये जो उर्दू की पोइट्री का एक्सप्रेशन है, जैसे अब ये मुझसे पहली सी मोहब्बत है, अब इसको कोई ट्रांसलेट करेगा एंड मेक्स अ हैश आउट ऑफ इट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब उसका पढ़ने वाला जो इंग्लिश समझता है वो कहेगा व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट दिस पोएम, व्हाट्स सो ग्रेट, क्योंकि ट्रांसलेशन में उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा। सो इट यू वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। ट्रांसलिटरेशन नहीं होना चाहिए, Very ट्रांसलेशन well होना said. चाहिए, मे बी Very well said. ट्रांसक्रिएशन होना चाहिए। द ट्रांसलेटेड पोएम शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, ये बहुत जरूरी है। Very तो well मैंने said. Yes, you गुलजार are right. साहब की त्रिवेदी को किया था ट्रांसलेट हाइकू में। Acha, okay, मतलब okay. The त्रिवेदी Japanese haiku. The हाइकू में Japanese. कन्वर्ट किया था, एंड अभी Yeah. तक वो मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं उसको पब्लिश करूंगी, आई कांट डू दैट। तो वो हाइकू Hi. में I retained the essence. And I remember having posted one of haiku on the मेरे Facebook के timeline पर, and one guy from Pakistan tells me आपको इसके नीचे गुलजार साहब का credit देना चाहिए, and I was so happy that person identified कि मैंने किसका त्रिवेदी को translate किया है। तो essence रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी, otherwise Wow. you're doing injustice to the original poet। Wow, तो दोनों absolutely. व्यूज ठीक है, नसीर साहब के भी और रत्ना जी के भी, दोनों के व्यूज ठीक है। या तो मैं ये हाँ, ये जवाब काफी टाइम से तलाश रहा हूँ मैं, एंड जी, आई समटाइम्स आई फील ओके, एज यू राइटली सेड, अगर आप किसी एक पोएम को ट्रांसलेट कर देते हो यू मेकिंग अ हैश आउट ऑफ इट, तो मतलब या नहीं है। बट देयर आर सम पोएम्स व्हिच आई लाइक, फॉर एग्जांपल मिर्जा गालिब वन लेटर एक चेस्ट उर्दू में था, मेरे को 8 बार पढ़ने के बाद बार 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 बार, तब मुझे, आई स्पोक टू माय ग्रैंडमदर, आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल एंड आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग इट, तब मुझे समझ में आया, इतना चेस्ट उर्दू थी इसकी। आप इजाजत दें तो मैं ये लेटर पढ़ता हूं मैं। सो मिर्जा गालिब साहब क्लोज एड मिर्जा तफ्ता, हिज बिलवेड डाइज, सो वो ताजियत में खत लिखते हैं, अ लेटर ऑफ कंडोलेंस, एंड ही राइट्स या टू हिज मिर्जा तफ्ता, गम ना खाओ, चुना जान ना सही मुन्ना जान सही, जब मैं बहिश्त का तस्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अखामत जा वेदानी है और उसी नेक वक्त के साथ जिंदगानी है, इस तस्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है, हाय हाय वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी, मियाँ होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट ही मेंट, फिर जो है sat down with my grandmother and I understood, okay, by every line, एक एक हर्फ, एक एक, तब मुझे समझ में, अच्छा ओके इसका ये मतलब है, and I saw the depth of it. It's like, and like this letter, if I don't translate it, it loses its essence for some people, because या like, huh? So he और एक means, और बात बोलूंगी, बिसाइड्स ट्रांसलेशन वाली एक और बात है, लैंग्वेज जो यूज होती है, मुझे पता है बहुत से पोएट्स अपने हिसाब से लिखते हैं वोकैबुलरी को। आई पर्सनली लाइक टू राइट सिंपल, because I want more and more people to be able to relate to my poetry and to be able to say कि अरे ये तो मेरे words हैं, मतलब मेरा दिल की आवाज़ है जो इन्होंने लिखी है। Not very simple, because simple poems like गुजार साहब says simple poems run very deep, और आपको अगर लगता है कि simple poems like casual dressing की तरह हैं, तो ये मान लीजिए कि casual dressing को का expert होते होते आपको सालों लग जाते हैं। Casually dressing with elegance, आप यू कुड बी, अब आजकल जो आप लोगों की एयरपोर्ट लुक है, आप क्या सोचते हो कि वो ट्रैक सूट पहनकर सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट पर आते हैं, पर उस पे भी वो बहुत मेहनत करते हैं टू लुक एलिगेंट इन कैजुअल ड्रेसिंग। और अब मैं इसकी एनालॉजी से निकाल कर रही हूँ, आपको उतना ही वर्क हार्ड करना है, उतना ही प्रैक्टिस करना है। सो टू राइट अ सिंपल पोएम, मे बी अ मेटाफरिक राइट, मे बी मेटाफरिक पोएम, सिंपल दैट रन्स डीप, you have to have practice of so many years, नहीं तो वो तो नर्सरी टाइम लगेगी ना। ये absolutely, absolutely, yeah. I absolutely, have and the seen my beauty of, mentor Sukrita Paul Kumar writing so simply, Keki sir writing so simply. अरे So केकी सर, पता है लास्ट ईयर व्हेन आई मेट केकी एंड नरूवाला, तो हम स्कूल में था हमारा yeah, सिलेबस I है। have your picture of Yeah, you guys yeah. sitting. I was so enamored. In fact, Love Across Yes. the Salt Desert था हमारा एक lesson where Ala Rakha was जी. a camel and Fatima would live across the border. And फिर जब मैं refugee film देखी, अभिषेक बच्चन जी. की, करीना कपूर की debut film, I thought perhaps it could be, I don't know, officially तो खैर नहीं, I asked,
Mr. KK Narwala, sir, ऐसा है कुछ है क्या? Is it an adapted of you? He said, no, I am not aware of. They didn't ask me anything, अच्छा, so I don't know. So I was like, okay. And हाँ, तो बहुत सी मोटिवेशन होती है ना, द फॉर्म ऑफ स्टीलिंग. I know. So I was like really enamored, when I met. I was like, so Darwala is here. I was like, wow, जिनको हम स्कूल में पढ़ते थे, it was like, आपका Delhi Poetry Festival ना कमाल का है, माशाल्लाह, it's कमाल का. I must say that थैंक it's यू. really, really, and it's all your hard work, and poetry is something. It's something like very, very close to my heart. It is. I enjoy performing. I enjoy listening to poetry. I enjoy reciting it as well. है ना? जी. तो आपसे कोई भी एक पोएम, एक दरखास्त कर सकता हूँ मैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, कोई सी भाषा में. मुझे ना अली याद नहीं रहती है, प्रॉब्लम ये है. मैं इतना पढ़ लेती हूँ, आई एम वेरी बैड एट, लाइक मेरी अपनी पोएम्स भी, अगर मुझसे कोई बोलता है मैं ब्लॉग खोलती हूँ अपना उस पे रीड, वो मज़ा नहीं आता है. तो शायद मुझे आपको मेरी, शायद आपको मैं भेजूंगी और आप कभी लोगों को पढ़ के सुना दें. बस मुझसे ये मतलब आप बोलो तो मैं निकाल के पढ़ूंगी, बट वो मज़ा ही नहीं आएगा. सो यस. राइट. एंड मुझे लगता नहीं कि अंग्रेजी की पोइम्स में लोगों को अभी इतना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम सबकी जुबान तो हिंदुस्तानी है ना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो आप और डॉली, पूछो मुझसे. मैं मैं अंग्रेजी में सुनाऊं या एक आई वांट टू रिसाइट अ पोएम. श्योर. आई वांट टू. कौन सी, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में या संस्कृत में? कोई नहीं, किसी भी लैंग्वेज में सुनाइए. ठीक है, एक शुद्ध हिंदी में सुनाता हूँ मैं. ठीक है. I don't know who the author. I'm so my heartfelt. कि कोई किसी को मालूम है, अगर याद है ऑथर का, तो आप लिख देना प्लीज. माफ करना मेरे को. I don't mean to this thing. And it is श्रेष्ठ का वरण. ओके. छा गई मानो गहरी शांति जिस समय नचिकेता ने अडिग ज्ञान का वरण किया. जिस पल शरीर की मांगों को स्थगित किया, माना जीवन केवल सुख की साधना नहीं, वह दिव्य शक्ति, अनवरत खोज, अंतक प्रयास, वह मुक्ति बोध. उसको पशु सा केवल तन से बांधना नहीं, जो केवल तन से जिया मूर्ख वह तन के मरते मरता है. हम वस्तु नहीं है, वस्तु स्थित. सुख का पीछा जैसे अपनी दुम का पीछा करता कुत्ता, वह स्वयं स्वयं अनुपस्थित. वह वर्ण नहीं, मानो खो देना था अपनी पहचान एक, आकार एक. जैसे आकृति की शर्तों से बाहर आए संदर्भ रहित, पूर्व अनुरागों से टूटा अस्तित्व की तू अपने को न सिद्ध न कर पाए. नभ में भटके जल को थाहे, क्षण में त्रिकाल जीना चाहे, परंतु अपने को पुनः ना सीमित कर पाए. So this was in चेस्ट हिंदी as well. शुद्ध हिंदी में थी. वेरी वेरी, या lyrical Yeah. also, and very powerful poem, just like Rashmi Rati. I was asking you yesterday, Rashmi Rati कोई पढ़ सकता है तो I would really want, through your medium also, I would say कि अगर कोई बहुत powerful रश्मि रति की rendition कर सकता है तो please come to Delhi Poetry Festival, contact us, क्योंकि वो बहुत powerful हैं. And for that matter, रामधारी सिंह दिनकर के जितने भी महाभारत पर जितने भी हुए हैं, they're very powerful dialogue in the form of poetry. So when you ask my favorite, so शायद ये एक है. अरे वाह. There is a poem that is going viral on internet, और हर बार जब कुछ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ कुछ अत्याचार होते हैं, atrocities होती है, तो ये पोएम दोबारा से सरफेस पर आती है. क्या था, समथिंग अबाउट खड़ग उठा, सॉरी, हथियार, दे टॉकिंग अबाउट द्रौपदी. he's addressing द्रौपदी. उठो द्रौपदी, खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. अब गोविंद ना आएंगे इज अ पोएम दैट आई रियली लाइक, एंड मैंने कितनी बार अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट किया है उसको, कि अरे वाह. it's actually telling a girl to not to depend on anyone but to pick the arms herself, कि वो खुद किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी की तरफ देखे भी नहीं, अपने आप अपनी रक्षा करें. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो मोटिवेट करती हैं लड़कियों को, I would want more and more poets to write about that also. Yeah. तो और मैं यही बोलूँगी, आप जैसे लोग जो पोइट्री को या जो थिएटर को या whatever besides being a defense expert, आप ये सब जो कर रहे हैं, that is also very inspiring. क्योंकि हमारा एक साइड होता है जो हम प्रोफेशन में लगे होते हैं, the other side is the second side जो हमारा साइड में करते हैं. Any creative work that we do,
that is that does not only feed our own soul but impact many more people, Right. है ना? एंड यस, That's तो very मैं ये चाहूंगी, या तो ये आई थिंक ये बहुत जरूरी है, हर एक का किसी क्रिएटिव आर्ट, किसी चीज से जुड़ना बहुत जरूरी है. absolutely, yeah, absolutely. And Dolly, what are your social media handles or of the Delhi Poetry Festival? If you want to reach out, they want to contribute, they want to participate, or they want to support Delhi Poetry Festival anyway, how can they reach out to you? तो डेली पोइट्री फेस्ट हमारा इंस्टाग्राम पे है, डेली पोइट्री फेस्टिवल हमारा फेसबुक पर है, द नेम, ओनली द नेम डेली पोइट्री फेस्टिवल ऑन फेसबुक, डेली पोइट्री फेस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड हमारा उस पर है, ट्विटर पर भी है डेली पोइट्री फेस्ट. So we keep posting, updating all our activities, upcoming activities on these handles. Our website is delhipoetryfest.org. If somebody wants to contact us, तो उस पर भी कर सकते हैं. And, नहीं तो आपको कर सकते हैं. They can write to you. You are also Anytime, part of it. anytime. Thank you. So it's an honor, it's a privilege. I mean, truly, I mean, thank you for considering me worthy to Thank be you, a part Ali. of the Delhi Poetry Thank Festival. you It's for such an having honor. me over. Yeah. Thank you, Jai Dolly. It's Hind. been Jai Hind. Wonderful being in conversation with you. Yeah. Thank you very Thank much. you. Ji.